Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Class 9 student. In this video we understand exercise 6.5. Question number 1, fourth part. Student, I will explain this question with two easy method in this video. We have to find the values of x, y and z and they given us the right angle triangle. Angle at A, they given us the 45 degree. Angle at B, we have 90 degree. Now we have to think what is that angle at C. For thinking angle at C, we know that the sum of all angles of our triangle is equal to 180 degree. तो 180 डिग्री में से 45 और 90 डिग्री को माइनस कर देंगे, we get the angle at C. Let's do it. 180 degree minus 90 minus 45. We get 45 degree. Means angle at C is 45 degree. Now, first method I will explain by using the sine 45 degree at angle at C. If we take at angle at C sine 45 degree, sine 45 degree is equal to, you know that sine is SPH, which is equal to perpendicular over hypotenuse. What is the perpendicular and hypotenuse side? Now we have to find out by using the angle at C. एंगल एट सी 45 डिग्री को हमने बेस लिया है तो बी सी लाइन हमारी बेस साइड होगी. ए बी साइड विच हैव द 90 डिग्री एंगल इज आर परपेंडिकुलर साइड एंड द ऑपोजिट of angle 90 degree, the side longest side AC is our hypotenuse side. साइड्स को सिलेक्ट करने के बाद वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. परपेंडिकुलर वैल्यू बाय यूजिंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल y is equal to 4, substitute 4. Hypotenuse value AC which is equal to z, substitute z. Now substitute the value of sine 45 degree from the table, which is equal to 1 by square root 2. Substitute it. 1 divided by square root 2. In the next step we do the cross multiplication. हम cross multiply कर देंगे. Denominator goes on the other side, multiply हो जाएंगे. It become 1 multiply z and 4 multiply square root 2. 1 multiply z we get z. 4 multiply square root 2 we get 4 square root 2. We get the value of z which is equal to 4 square root 2 centimeter. In the question statement they given us the y is equal to 4 centimeter. We calculate the value of z. Now for finding the value of x, we use the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. Hypotenuse value by using the right angle triangle is z. now hypotenuse की value z है, base की क्या है x और perpendicular की y है. It means that it become z square is equal to x square plus y square. Now substitute the value of z we already calculated in the previous step, which is equal to 4 square root 2. X square plus y value they given us in the triangle is equal to 4. So substitute 4 square. Now by using the calculator हमने स्क्वायर कैलकुलेट करना है. ब्रैकेट 4 स्क्वायर रूट 2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू वी गेट 32. इसका स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर से, वी गेट 32 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 4 विच इज इक्वल टू 16 प्लस 16 goes on the other side. 32 minus 16, positive change into negative. When we take the constant on the other side, positive sign change into negative. 32 minus 16 we get 16 is equal to x square. Now by using the implying sign right into the arrangement order, x square is equal to 16. We need to find the value of x. x की value को calculate करना है तो by taking the square root we can find the value of x. So take the square root on the both side of the equation. This square cut with square root will get x and square root 16 is equal to 4. We get the value of x is equal to 4 centimeter, which is our required answer.
Now student, I will explain the second method. This method is also a very easy method. We need to calculate the value of x, y and z by using this right angle triangle. Now I will explain this method by tan 45 degree. Tan 45 degree, by using the tan 45 degree angle at A, 45 degree angle है हमारे पास. So this is our base side. And angle at B 90 degree. This is our perpendicular side. BC side is perpendicular side and AC side is our hypotenuse side. tan 45 डिग्री के एंगल को यूज़ करते हुए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करते हुए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? tan 45 डिग्री इज इक्वल, by using the formula of tan 45 degree, tan formula is TPB, means perpendicular over base. Perpendicular value is x. Substitute the value of x by using the right angle triangle. Base value we have y is equal to 4 centimeter. Substitute 4. Now tan 45 degree value. 45 degree value. Tan 45 value. Tan 45 degree value is 1. So substitute the value of 1 from the table. 4 is the denominator. Goes on the other side. Become multiplication. 1 multiply 4 is equal to x. We get 4 is equal to x. By writing the implied sign, writing in arrangement order, we get x is equal to 4 centimeter. Student, we know that Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Hypotenuse side is z. We write z square. Base side is, base is y and perpendicular is x. So rather than base, substitute y square, and perpendicular x, we get x square. Now we have the value of y and x. Substitute the value of y and x. Y value we have in 4. Y value 4 given है हमें. Substitute कर देंगे इसकी जगह. और x की वैल्यू वी कैलकुलेट इन द प्रीवियस स्टेप. हमने प्रीवियस स्टेप में कैलकुलेट की है. सब्सटीट्यूट 4 स्क्वायर. 4 स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 4 16. दिस इज ऑल्सो 16. 16 plus 16 is equal to 32. We get z square is equal to 32. Now for finding the value of z square, we need to take the square root on the both side of the equation. Take the square root. Z square is equal to square root 32. This square cut with square root we get z. और square root 32 को कैलकुलेट करने के लिए हम 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. 2 1s are 2, 2 6s are 12, means 2 16s are 32, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा वैल्यू की पावर को 2 बनाते हैं. हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं जिनकी पावर 2 बन रही है. इसको लिख देंगे 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई. इसको मेंशन कर देंगे 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई. और ये सिंगल हमारे पास 2 बचा है, इसको सिंगल मेंशन कर देंगे. दिस स्क्वायर 2 जिनकी पावर 2 है वो अपने स्क्वायर रूट से कट कर बाहर आ जाएंगे, बिकॉज दिस स्क्वायर रूट एंड दिस स्क्वायर रूट कट विद स्क्वायर रूट एंड कम आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर रूट. 2 मल्टीप्लाई 2 और इस 2 जिसकी पावर 2 नहीं थी, इट लीव इन साइड द स्क्वायर रूट. 2 मल्टीप्लाई 2 वी गेट 4 स्क्वायर रूट 2. वी गेट द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. Student, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.